Hi everyone, welcome to APC Tree. So in this video, I'll discuss about what to do with PYQ, what is the importance of previous year questions and how you should handle them going forth. Let's begin. Previous year questions are important, but I have seen aspirants जिनका पूरा preparation PY के ऊपर ही base है. That means 80 to 90% of their preparation is based on PYQ. That means एक दो साल आप प्रिपेयर कर रहे हो बट बिफोर एग्जाम यू आर ओनली रीडिंग से 4 to 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड गोइंग टू द एग्जाम. दोज हु डिड दैट, इस बार जो पीएससी का एग्जाम हुआ था, दे वेर इन फॉर ए रूट शॉक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्यों पीवाईक्यू काम? पीवाईक्यू इज एसेंशियली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग सिलेक्टिव स्टडी. सिलेक्ट स्टडी में क्या होता है? सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ नॉलेज, you read only certain parts of the syllabus or certain chapters of the syllabus. Then there exists what we call the knowledge void. आपने तो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है, आपने did the selective study that you have done and you have become confident that यही question आएगा and I will write it and I will get a rank. But then again, last year if you look at the mains, everyone was for a root shock because they have asked very different kind of questions which I have been telling the students from the very beginning of the year. See, there exists a knowledge void. अगर knowledge void रहेगा ना, अगर कहीं से भी question आ गया, फंस जाओगे. And that's what happened last year. So let's look at how to deal with the PYQ. See, PYQ important है, but you should not make PYQ your sole basis of your preparation. आपका पूरा जो 80 to 90% of preparation जो PYQ के ऊपर बेस होता है, ये होना नहीं चाहिए. Okay, if you do that, then you are disrespecting your time and your preparation altogether. Instead, if you look at the questions last year also, what kind of questions, the kind of knowledge that you should have to answer that questions, you need what? Two things: accumulation of knowledge and internalization of knowledge. इसका मतलब क्या है? accumulation and internalization, ठीक है. PYQ 80 to 90% प्रिपरेशन का आपका स्ट्रैटेजी नहीं होना चाहिए. दिस विल बैकफायर गोइंग फोर्थ. क्यों? बिकॉज PYQ हैज अ लिमिटेड, आप पूरा you are not developing a wholesome understanding of the subject, then your answer will not be rich, will not be good enough to get you a very good rank. जो पहले होता था वो छोड़ दो, अब नहीं है. accumulation of knowledge and internalization of knowledge क्यों जरूरत है? क्यों? if you look at the questions, let me give an example. Okay, say you are writing the mains paper. Mains paper 3 घंटे का होता है and in 3 hours you are writing somewhere around 2500 to 3000 words. Fine, 2500 to 3000 words अगर आप लिख रहे हो, it's like driving. Okay, and our brain has two parts, cautious brain and the subconscious brain. Suppose somebody met with an accident and when they recover, come back from the coma, they remember how to eat, they remember how to drive, but they won't remember other things. That is because some things do travel to the subconscious brain. जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हो या कोई चीज़, when you do it in repetitive manner, it goes deeper into your subconscious. आपको ये say that particular road that you used to travel for 1 year or 2 years, you don't need to remember that road. कहाँ पे बाएं लेना है, कहाँ पे दाएं लेना है, automatic these things do happen. That is what I call the subconscious brain. And subconscious brain will kick in specifically when you are writing 2500 to 3000 words in 3 hours time period. यहाँ पे conscious mind काम ही नहीं करेगा, आप सोच ही नहीं पाओगे. ठीक है, that means whatever the things that you have accumulated over the years and what are the things that you have internalized, आप सोचे हो इसके बारे में and you have internalized those things inside you, those things will kick in. Maybe conscious mind will work for say 1 hour, then आपका ब्लैंक आउट शुरू हो जाएगा. ठीक है, और ब्लैक आउट शुरू हो जाएगा. So that's why subconscious mind in this kind of situation will kick in. And
दैट इज द रीजन व्हाई आई आस्क माय स्टूडेंट्स टू मेक देयर ओन नोट्स. क्यों? खुद के नोट क्यों बनाओ? टॉपर्स के फॉलो मत करो. टॉपर्स फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं फॉलो कर सकते. सी व्हेन यू मेक योर ओन नोट you develop an intimate knowledge of the subject. ठीक है? When you develop an intimate knowledge of the subject, you internalize those things. When you go back to the notes, you remember well, you recognize those things well. और किसी के अगर नोट्स आप पढ़ रहे हो, then we don't have that, don't develop that intimacy with the subject or with the notes. एग्जाम्पल देता हूँ, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है. यूक्रेन वांट्स टू डिफीट रशिया बट यूक्रेन डज नॉट हैव द वेपन्स. ठीक है, ये कॉपी पेस्ट का काम कर रहा है क्या? इट हैज बीन टेकिंग asking arms and ammunition from USA, arms and ammunition from European countries and all that. And by doing that, by begging across the world or begging from others, you cannot win the war. When you want to win the war, you should have your own arms and ammunition. Same logic applies over here. If you want to get a good rank, write your own notes. You can refer the topper's notes, no doubt about it, but to enrich your content. खुद के नोट पहले बनाओ, उसके बाद टॉपर्स के नोट फॉलो करके कुछ अगर ऐड कर रहे हो तो करो. डोंट ये टेलीग्राम में ये डाउनलोड कर लोगे, ये डाउनलोड, कुछ नहीं होता है उससे. ठीक है, पीपल हैव डाउनलोडेड इट, वेस्टेड देयर टाइम. लिमिट योर सोर्सेस, do it the right way, then only you will get a rank. Okay, make your own notes instead of just copy pasting all these things. That is not going to work henceforth. Remember that. Okay, now moving on, importance of PIQ. Yes, it is important, but make previous year questions as to help you analyze, help you strategize, and it should form say 15 to 20% of your preparation strategy. Okay, not 80 to 90%. If you do that, you are going to face some kind of difficulty in the upcoming mains exam. That is what the experience is coming out from this year and last year's mains exam. Okay. Another thing, students usually ask कि PIQ solution books खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? The big answer is no. Last time when you heard about a topper who has talked about कि मैंने ये solution book खरीद लिया और topper बन गया, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ द सॉल्यूशन बुक्स आर बिलो एवरेज. बिलो एवरेज भी नहीं है, ये पढ़ने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, बिलो एवरेज कंटेंट एंड वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम. इट्स नॉट दैट वी हैव नॉट बॉट इट, आई बॉट इट, माई फ्रेंड्स बॉट इट, ऑल ऑफ देम बॉट इट, वी गॉट इन टू द सर्विस, स्टिल दिस बुक्स आर वेस्टेड. इट इज सो धूल जम जाएगा उसके ऊपर और कुछ नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए अच्छा ही नहीं लगेगा. बिलो एवरेज कंटेंट है. इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, refer the standard books, make your own note, develop an understanding of the subject. That is the right way to prepare. देखो, अगर आप 1 साल या 2 साल दे रहे हो प्रिपरेशन को, and your whole preparation is based on say 4 or 5 PYQ, and with that you are going to the exam, there you are in for a rude shock. Okay, don't do that. बिकॉज ऐसे करते करते क्या होगा ना, आपका 3-4 साल चला जाएगा, 3-4 अटेम्प्ट चला जाएगा, देन दैट जेल, दैट एंथुसियाज्म एटसेट्रा विल बी लॉस्ट. डोंट डू ऑल दिस शॉर्टकट्स नेवर वर्क्स इन एटलीस्ट सिविल सर्विस एग्जाम. शॉर्टकट्स मत लो. ठीक है, दे विल कट यू शॉर्ट. तो शॉर्टकट मत लो, पता चलेगा कि 3-4 साल ऐसे ही फालतू में बर्बाद हो गया. डोंट डू दैट. 1-1.5 साल अच्छे से प्रिपेयर करो, अपनी खुद के नोट बनाओ, अपने मेक योर आर्म्स एंड एम्युनिशंस रेडी, देन ओनली यू कैन फाइट ए वार. ओके, कॉपी पेस्ट करके कितना ही कर लोगे, फाइट नहीं होगा. ठीक है, सो शॉर्टकट्स मत लो. डोंट मेक PYQ 80 और 90% ऑफ योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी. डोंट रिपीट दिस मिस्टेक गोइंग फोर्थ. ओके, स्टैंडर्ड बुक्स खरीदो ही मत. अगर अच्छा लग रहा है और इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, बाय इट. बट देन आई कैन गारंटी कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है. ठीक है, सबके पास है, कोई पढ़ता नहीं है उसको. नाउ व्हाट टू डू विथ PIQ. PIQ आप यूज करो टू एनालाइज द एग्जाम, टू स्ट्रेटेजाइज एंड टू प्रेडिक्ट. दैट्स इट. एंड PIQ शुड फॉर्म 15 to 20% का आप जो स्ट्रैटेजी है, एनालिसिस है, स्ट्रैटेजी ये है, 15 to 20% should be informed from the idea of PIQ. PIQ is important, but then 15 to 20% is important. Then what else is important, you can ask me.
another thing is called syllabus that most of you don't look at. Syllabus, look at the syllabus, look at the untouched part, कौन से part से question आया नहीं है. That's how you prepare. That's how the question they have been asking going forth and will be asking going forth. Okay. So, thank you. And to summarize all these things, first, make your own notes if you want to be a topper. Okay. You can refer everyone else, but make your own notes so that you develop that intimacy with the notes or internalize them well. Okay. That is first. Second, PAQ, analyze them, strategize them. But then again, don't disrespect your preparation by, just basing your preparation on say 4, 5 or 6 PAQ. Don't do that. That way you are wasting your time. Nothing good will come out of it. Please, be cautious about that. Okay. Respect yourself, prepare the right way so that 1-1.5 साल दो अच्छे से prepare करो, then you will, you'll get through. But if you are doing it, say, if you are taking shortcuts, then it will be a loop. Okay, एक attempt नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा. Don't do that. Okay. So if you have any questions or query, you can reach out to me. Thank you.